Start recording. अच्छा, ओके। हाँ, ये जरा, अरे ये कैमरा ऑन रखो ना। जो 20 आ गए हैं अभी तक स्टूडेंट्स। फ्रॉम 8 to 81 नेटवर्क इशू है। क्या इशू है? अच्छा, इसलिए कैमरा ऑन नहीं हो सकता। बात तो कर सकती हो। अच्छा, यू विल रीजॉइन। ओके, रीजॉइन। ओके, चलो मैं उसको करेक्ट करता हूँ। Now, to prove holders inequality using that lemma, सर अब हो जाएगा। नहीं, अब ये रिकॉर्ड में आ जाएगा ना। Now in the proof मैं लिखता हूँ, चलो, of holders inequality using the lemma in the previous lecture. चलो लिख देते हैं। Take A equal to mod f of x divided by norm of f p whole raised by p, ये है ना? And b equal to, कैसे करूँगा? And b equal to, what was that? G of x raised to power divided by norm g का cube whole raised power 1 by q. Instead मैं पूरा लिख देता हूँ। सर होल रेज बार क्यों? हाँ, यहाँ पे होल रेज पर क्यू है। सर देखो फिर से। ओ यस, होल रेज पर क्यू। हाँ, सो तो ये हो गया। सो लेट्स स्टार्ट। जो मैं कह रहा था लास्ट टाइम, रीज फिशर थे। रीज फिशर थ्योरम जो है, इसमें हम यूज करेंगे वो मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम एंड आल्सो लीवाइस थ्योरम। तो लेट मी फर्स्ट स्टेट, 1 is less than equal to p is less than infinity, then this space, this normal linear space is complete. तुम्हारे सिलेबस में उन्होंने लिखा है LP AB is complete, but जब ये है, this is for any general measure space, so AB is also a measure space and a Lebesgue measure, so ये उसको contain करता है, it's more general. अब proof ये है, proof में हमें वैसे ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए. So we have to show a Cauchy sequence that converges. We take a Cauchy sequence in this space, this normal linear space, और इस पे जो norm है, let me norm f को norm f sub p कहते हैं. It is integral over the जो भी set है under consideration, mod of fx raised to power p d mu, where mu is a measure, raised to power 1 by p. Okay. Proof. So let's take a Cauchy sequence. Let Fn be a Cauchy sequence in LP mu. Now you know that when I say LP mu, I mean that F is measurable. LP mu means F belonging to LP mu means F is measurable, and this thing exists in a mod F raised power P is Lebesgue integral. So that's our definition of LP, which is a normal linear space. So by passing to a sequence, ये बड़ा ही general एक technique है. By passing to a subsequence, अब चूंकि बुक में है थोड़ा सा assume कर लेते हैं, तो मैं लिख देता हूँ सीधे, हम भी थोड़ा ऐसे ही लिखें.
चलो फिर मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करूंगा. We can assume without loss of generality. ये हमने किसी जगह यूज किया होगा ये आइडिया इन फंक्शनल एनालिसिस 1. डेफिनेटली किया होगा क्योंकि वहां पर ऐसा हम करते हैं जब हमें कंप्लीटनेस प्रूव करनी है. We can assume that norm of fn plus 1 minus fn sub p is less than 1 by 2 raised power n for all. देखो यहाँ पे मुझे वो थोड़ा सा ये बताना पड़ेगा. Why doesn't this change anything? Because in a metric space now LP mu जो है is a metric space. It's a non-homogeneous space, therefore a metric space. In a metric space, if a Cauchy sequence has convergent subsequence, it is convergent. ठीक है? So it is sufficient to show that अगर मैं Cauchy sequence में convergent subsequence दिखाऊं तो ये काफी है कि वो convergent होगी. क्योंकि suppose xn is Cauchy, so you would have dxn dxm is less than epsilon as nm is bigger than some n naught, right? Bigger than or equal to some n naught. So I just take dxn and it has also a subsequence. वैसे ये रिजल्ट तुमने किया होगा. ये रिजल्ट किया है ना if in a metric space दो लाइंस का है. As a Cauchy sequence has a convergent subsequence, then it must converge. किया है ये? यस सर. किया है तो मैं ये छोड़ देता हूँ. ठीक है? यानी अगर मैं सबसीक्वेंस के लिए दिखाऊं तो ये ट्रू है. तो इसीलिए हमने किया बाय पासिंग टू ए सबसीक्वेंस इफ नेसेसरी. अगर हमें जरूरत पड़ी तो हम एक सबसीक्वेंस के लिए दिखा सकते हैं, तो उससे भी ये हो जाएगा कि ये कन्वर्जेंट है. लेकिन अब ये साथ में ये कह रहा है कि हम मान सकते हैं कि इस Cauchy सीक्वेंस की एक सबसीक्वेंस ऐसी है सच दैट कंसेक्यूटिव टर्म्स की जो डिफरेंस है इन नॉर्म वो लेस देन 1/2n है. मतलब दैट्स वो हमें थोड़ा इसके बारे में सोचना है. तो सबसीक्वेंस के लिए दिखा देंगे तो वो सफिशिएंट है फॉर अ मैट्रिक स्पेस. ये तो तुमने देख ही लिया. लेकिन देखो अब क्या है, व्हाट इज हैपनिंग इन अ Cauchy सीक्वेंस. इस तरह से है x1 x2 so on and so forth. और ये जो ये टर्म्स जा रही है ना उनके दरमियान जो डिफरेंस है ना वो बहुत कम, आर्बिट्रेरीली कम हो रहा है. सो सपोज मैं आगे बढ़ रहा हूँ, यहाँ पर मुझे कोई टर्म मिली और उसके बाद यहाँ पे कोई टर्म मुझे मिली. ठीक है ना? मान लो x whatever x मिलियन फॉर अ मिनट और यहाँ पे मिले मुझे x2 मिलियन जाते जाते, क्योंकि इनकी डिस्टेंस जो है वो आफ्टर अ सर्टेन स्टेज इट बिकम्स लेस देन, मतलब fn minus fm is less than any epsilon for some nm bigger than n naught. After a certain stage इनकी डिफरेंस लेस देन एनी एप्सिलॉन होगी. तो मान लो अब आफ्टर अ सर्टेन स्टेज मान लो मिलियन और 2 मिलियन के दरमियान जो डिफरेंस है वो लेस देन हाफ है. ठीक है? तो मैं इसको अपना x1 बना लूंगा, इसको अपना x2 बना लूंगा ना, जो ना मेरी सब सीक्वेंस. और फिर इसी तरह से चूंकि ये और भी कम हो रही है एज वी आर गेटिंग हायर एंड हायर, फिर मैं देखूंगा x2 और x3 के दरमियान जो वही जो डिस्टेंस है, मतलब जो अब है ना ये x2, अब मैं देखूंगा नेक्स्ट वाली कौन सी टर्म है जहां पे डिस्टेंस है लेस देन 1/4 और मेरे पास इन्फिनिटली मेनी है. So I can go on and find such a subsequence such that this is true. That consecutive terms के दरमियान जो डिस्टेंस है वो मेरी मर्जी के हिसाब से चलेगी, क्योंकि of course the distance between the terms is getting smaller and smaller as we go towards infinity. So बस यही है. तो अगर हम ये मान लें, चलो इसको नाम देते हैं कुछ 1. Okay, we must show, अब हमें दिखाना क्या है, we must show that for some
f belonging to LP mu, that a function which is measurable and which is p to power integrable, such that your limit n approaches infinity, यानी in the norm fn minus f, इसका p to norm है ये 0 as n becomes very very large. तो हम क्या करेंगे, let g1 be the zero function. जब मैं कह रहा हूँ g1 is 0, it is at least, क्योंकि in the context of अगर g1 ae 0 भी होगा तो चलेगा, लेकिन हम g को 0 मानेंगे throughout, मतलब g1 is the zero map, and gn को मैं define करूंगा f1 mod of f1 plus mod of f2 minus f1 plus mod of f3 minus so on and so forth plus and fn minus fn minus 1. कहने का मतलब g1 जो होगा, यानी चलो मैं लिख देता हूँ, g1 जो है वो 0 है, यहाँ मैं लिख देता हूँ n greater than equal to 2 के लिए ये फॉर्मूला है. I have got a Cauchy sequence, उसकी मदद से मैंने एक और सीक्वेंस डिफाइन की. I have assumed that g1 is 0, मतलब g1 को मैंने 0 मान दिया, और of course g1 क्या होगी, g1 would be just mod of f1, मतलब ये रफ है. तो what would be g2? g2 would be mod of f1 plus mod of f2 minus f1. जब मैं इस तरह से लिख रहा हूँ, मेरे कहने का मतलब होता है कि g1 of x is the same thing as f1 of x, ठीक है, for all x. इसी तरह से g2 of x would be mod of f1 of x plus f2 of x minus f1 of x. इसी तरह से g of 3x एक और टर्म ऐड होगी. तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये जो सारी फंक्शंस हैं ये नॉन नेगेटिव हैं. दूसरा ये मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है, राइट. सो लेट्स राइट दैट डाउन. तो अगर मैंने ऐसे डिफाइन की, then 0 is less than equal to g1 is less than equal to g2 is less than equal to so on and so forth. So this is a monotonic increasing sequence, and integral gn raised to power p, actually x में नहीं लिखूंगा, but that's understood, x है वहां पे. gn raised to power p d mu बराबर है norm of gnp whole raised to power p, right. but अगर मैं इसको थोड़ा एक्सपेंड करूं, अंदर ये बन जाएगा summation I runs from 1 to, should I write it like this, n, चलो 1 to n mod of fi minus 1. इस तरह से ना gn डिफाइंड है, मैंने वैसे ही लिखा. थोड़ा सा हमें इसको करना पड़ेगा रेज टू पावर p इंटीग्रल डी म्यू. आई थिंक दैट्स इट इज, है ना. और अगर मैं थोड़ा सा नॉर्म को ठीक से लिखूं तो दिस वुड बी एक्चुअली 1 by p होल रेज पावर p. मतलब मैं थोड़ा सा इसको ऐसे लिखूंगा, हालांकि ये और ये कैंसिल हो रहा है. नाउ यूजिंग Holder's Minkowski's inequality, this would be less than equal to summation I runs from 1 to n integral fi minus 1. Should I write it like this? d mu, of course यहाँ पे आ जाएगा इसके बाहर, और यहाँ पे आ जाएगा nothing, क्योंकि मैं वो कैंसिल कर रहा हूँ. तो पहले आएगा 1 by p, but as you can see this is what it would be. So अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, now this would be equal to, पहले तो आएगा ये f1 minus f0. मैंने कैसे लिखा, मैंने कुछ थोड़ा सा गलती की. क्यों गलती नहीं की एक्चुअली, क्योंकि इसको ऐसे लिखना चाहिए, एक स्टेप एक्स्ट्रा करना चाहिए था. मेरे कहने का मतलब है I should have written GI better, वही होता.
मुझे लिखना चाहिए था यहाँ पे समेशन थोड़ा सा, क्योंकि G1 है ना 0, सो इट इज एक्चुअली ये तो हो गई ना दिक्कत। अब मैं इसको रफ करना पड़ेगा मुझे फिर से। मैंने थोड़ा सा यहाँ ज्यादा डिटेल करने की कोशिश की, उससे हो गई गड़बड़, इसलिए मैं पहले लिख देता हूँ फिर उसको रफ पे दिखाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे वो गड़बड़ कर देगा। दिस वुड बी लेस देन इक्वल टू norm of f1p plus summation I runs from 2 to n norm of fi minus 1 रेज टू मतलब pth norm जो भी है, ओके ठीक है, होल रेज पावर p। बजाय इसके मैं वो इंटीग्रल का चक्कर में जाऊं, ठीक है ना। सो ओके, सो आई रन्स फ्रॉम, एक ही प्रॉब्लम आ रही है, वो क्या, ठीक है, यू कैन जस्ट यूज द ट्रायंगल इनइक्वालिटी ऑफ द नॉर्म, क्योंकि हमने ऑलरेडी किया है, हम क्यों वो फिर से रिपीट की। ट्रायंगल इनइक्वालिटी ऑफ द नॉर्म वो हमने यूज की, तो हम क्यों बार बार उसको फिर वो पीथ पावर में लगा दें। नाउ बट दिस इज लेस देन इक्वल टू norm of f1p plus 1 raised to power p, because this thing, देखो हमने इससे पहले लिया है ना, हमने लिया है by our choice, chosen a subsequence or whatever such that norm of f n plus 1 minus fn is less than 1 by 2 raised power n. So of course what, so अगर मैं इनको ऐड करूं, summation I runs from 2 to n, अगर मैं लूं fi minus fi minus 1, ओके ठीक है हमने सीधा ये ट्रायंगल इक्विटी ऑफ द नॉर्म, दैट्स फाइन। सो वंस आई हैव दिस थिंग, ओके दिस इज लेस देन इक्वल टू, पहले तो ये आएगा एक्चुअली, चलो लिख देते हैं इसको, दिस इज इक्वल टू, दिस इज इक्वल टू आई को अगर 2 देंगे तो इट वुड बी f2 माइनस f1, नॉर्म में p छोटा सा यहाँ पे बैठा हुआ है तो प्लस f3 minus f2 plus so on and so forth, then I should have fn minus fn minus 1, ठीक है। Now by this fn plus 1 minus fn is less than 1 by 2n, तो अगर f2 minus f1 किसके बराबर है, f2 minus f1 is less than 1 by 2, f3 minus f2 is less than 1 by 4, plus so on and so forth, then this should be less than, oh yeah, plus less than 1 by n. So you have got ये जो यहाँ पे है, you have summation I runs from 1 to 2 to n, norm of fi minus 1 जो p है, this is less than equal to 1 by 2 plus 1 by 4 plus so on and so forth plus 1 by 2 raised power n, which of course is less than equal to 1 for all n. देखो जब n infinity को जाएगा तब ये 1 होता है, तो for so मैंने कहा ना फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू 1, क्योंकि इन्फिनिटी तक भी अगर हम जाएं तो ये लेस देन इक्वल टू 1 ही रहेगा, व्हेन इट बिकम्स वेरी वेरी लार्ज इट वुड अप्रोच 1। सो यहाँ पर मैंने लिखा दिस इज लेस देन इक्वल टू 1 फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ओके अब सही है। ओके नाउ बाय लीवाइस थ्योरम ये कहता है, लीवाइस थ्योरम should I state it? There exists some, चलो मैं लिखता हूँ पहले, G belonging to LP mu such that 0 less than equal to Gn converges upwards to G almost everywhere. अब ये मैं अगर यहाँ स्टेटमेंट लिखूं लीवाइस थ्योरम की, just to remind you, if you have a sequence of what do you call
integrable functions. लिख देता हूँ तो just write down. मैं क्या लिखा था? Okay, हाँ. So we have a sequence of Lebesgue integrable functions, a sequence of Lebesgue integrable functions. Fn satisfying. Fn is a monotonic increasing function. It need not be over every point, almost everywhere. और हमारा तो everywhere है, तो उससे better है हमारी assumption for all n, and limit n approaches infinity, integral Fn d mu is finite. जो कि यहाँ पे है, I have got a sequence of Lebesgue integrable functions. Because f's are Lebesgue integrable functions, therefore their mods are Lebesgue integrable functions, and hence their sum, finite sum, is also a Lebesgue integrable function. So gn's are all Lebesgue integrable functions, and furthermore, इसका जो ये है, so this is finite, है ना? Because this is norm of some fixed vector plus 1. I should have written there, this is less than infinity. Okay, this is less than infinity, means that GNP, तो Lebesgue कहता है, then there exists some Lebesgue integrable function. Then there exists some Lebesgue integrable function G, चलो F, that is Lebesgue integrable, such that Fn converges upwards to F almost everywhere, जो मैंने यहाँ लिखा, and उसके integral भी obviously integrals follow the order, yeah, they preserve the order. So, and of course, integral Fn also converges to integral F. Integral F. That's it. Of course, d mu मैं लिखना भूल गया, but Lebesgue integration में ऐसे करते हैं. So देखो अब उसका मतलब क्या हुआ? ये function है gn raised to p. For p greater than or equal to 1, it would preserve the order. So ये सारी properties इसकी आएंगी there. It's a collection of, it's a Lebesgue integrable function. And then you should have, what should you have? You should have g and p actually must converge upwards. Raised to power p must converge upwards actually to some h, Lebesgue integrable function h, which means gn must converge upwards to h raised to power 1 by p, जिसको हम मानते हैं g, और of course चूंकि h है Lebesgue integrable, उसका जो power होगा तो वो भी integrable होगा, positive power actually, और हमारा तो है actually what p is greater than 1, positive तो है. Okay, anyways, so according to Levi's theorem, there should be some g belonging to LP mu. So of course, to such that g n goes to g, and this is true. So okay, almost everywhere that's sufficient. Now from अब हम थोड़ा सा और करेंगे. अगर मैं लूँ अब ये f n plus k minus f of k, f of n, it can be written as summation I runs from, कहाँ से जाना चाहिए? I think n plus 1, नहीं, इसको एक टेलीस्कोपिक सम की तरह हम लिखेंगे. ये तो दो ही टर्म्स हैं. अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूँ as a telescopic sum, we can check always. I runs from 1 to n plus k, f of I minus f of I plus 1. यही होना चाहिए, I think, but we can check. फिर you can check. क्या हम चेक कर सकते हैं कि क्या ये दोनों बराबर है? इसलिए हमारा काफी टाइम है. अब मुझे लगा था ये हम आराम से कर लेंगे. Okay, so what would this be? This would be actually f1 minus f2 plus f1 minus f2 minus f3 plus so on and so forth. इसीलिए मुझे शक हुआ था. हाँ, it should be, हाँ, इसीलिए मुझे लगा था कि इसमें कुछ गड़बड़ है. It should be from n plus 1. अब सही है. अब जरा देखते हैं.
fn plus 1 minus fn plus 2, fn plus 2 minus fn plus 3, and so on and so forth. Last पे fn minus fn plus k, like plus fn plus k minus fn plus k plus. अब जैसा कि हम देख रहे हैं ये और ये कैंसिल होगा, इसी तरह से n plus 1 होगा, गड़बड़ हो रही। f of n plus 1 minus f of n plus 2, f of n plus 2 minus ये और ये खत्म, ये और ये खत्म, सारी टर्म्स खत्म हो जाएगी। इसी तरह से इसका लास्ट पे सर लास्ट टर्म आएगी fn plus k minus 1 minus fn plus 1। नहीं, लास्ट पे जब हम इसको देंगे ना n plus k, तो यहाँ आना चाहिए ना n plus k पहले। हाँ यहाँ, ओ सॉरी, देखो मैंने क्या कर रखा था, यहाँ माइनस, अब सही, देखो अब सही है। मुझे लगा ही था मैंने कुछ गलत लिखा, लेकिन चेक करना अच्छा है। सो इट वुड बी एक्चुअली fn plus 1 minus fn plus fn plus 2 minus fn plus 1, एक एक कम हो रहा है ना, and so on and so forth, and you have f of n plus k minus f of n plus k minus 1। अब सही है। देखो अब क्या होगा, ये कैंसिल क्या होगा फिर, पहले मैंने n plus 1 लिया, यस, तो बचेंगी खाली ये वाली टर्म और ये वाली टर्म, बाकी सारी कैंसिल हो जाएगी। यानी इसका पहला और इसका एंड खत्म होगा, हर एक का पहला और लास्ट वाला एंड खत्म होगा, तो बचेगा खाली fn, मतलब यही है। अब सही है। Now this would be less than equal to, देखो क्या होगा, summation I runs from n plus 1 to n plus k, modulus of fi, ये तो सीधा ही है, fi minus 1, और जब मैं यहाँ लिख रहा हूँ इसको, basically I am saying evaluated at x, so that's understood, which is the same thing as g of n plus k minus g of k. Okay, इसका मतलब क्या? g of n minus g of n, नहीं, अगर हम देखेंगे ये तो सीधा ही है, because it is the sum, ये जो g है ना सर, ये आया ना यहाँ से आया ना, ये f of n plus k minus f of n। नहीं, यहाँ पे तो कोई नहीं है, यहाँ पे तो ट्रायंगल इनइक्वालिटी है। अब जो ये है, इट इज जस्ट द डेफिनेशन। देखो gn इज सम, दिस टाइप ऑफ सम, तो मैंने n प्लस kth सम से kth टर्म निकाले, नहीं nth टर्म निकाले, तो ठीक है, यू आर राइट, दिस हैज टू बी g। तो ये g ऑफ n है, अब इतना ही है बेसिकली। नाउ बाय दैट आई मीन, एक्चुअली जब मैंने कहा ना इसको मॉड इस तरह से लिखते हैं, तो इसका मतलब आई एम इवैल्यूएटिंग द मैट्रिक्स, यानी दे आर नंबर्स, तभी तो मैं मॉड लगा रहा हूं, वरना एज अ फंक्शंस तो वो वेक्टर्स हैं। अब चूंकि ये नॉन नेगेटिव है, तो ऑफ कोर्स यू कैन जस्ट assume that there is a mod. Now since gn जो है, we know that gn converges to g almost everywhere, तो चलो हम लिख देते हैं। So it follows that चलो मैं लिख देता हूँ, it follows that fn converges pointwise almost everywhere to some function f। ये क्यों होगा, इस वजह से होगा, ये जो इस सीक्वेंस है gn, we already know gn converges to g's almost everywhere, so it is Cauchy almost everywhere। so जब मैं यहाँ n को अप्रोच करूंगा इन्फिनिटी, है ना, n प्लस के ऑटोमेटिकली अप्रोच करेगा इन्फिनिटी, यानी ये दोनों इंडिसेस अप्रोच करेंगे इन्फिनिटी को, और जब ये दोनों इंडिसेस करेंगे अप्रोच इन्फिनिटी को, इट वुड मीन दैट it would approach 0, right? Because every convergent sequence is a Cauchy sequence. So as n and n plus k automatically approaches infinity, this must go to 0, right? Because this is a Cauchy sequence, because it's मतलब Cauchy almost everywhere, because it is convergent almost everywhere. तो इसका मतलब ये जो sequence है यहाँ पे, because it is less than or equal to 1, as pointwise x, no, pointwise it must be a Cauchy sequence, but it's a sequence of numbers, so it must converge pointwise to some function f, right? Right, because मैं पहले कह रहा हूँ ना, actually यहाँ पे लिखा नहीं है, but it is meant, it is evaluated at a point. So I have found now a function f
such that fn, so now I have also, अब साथ में ये भी लिख सकते हैं, so I have found an action, and since I can write modulus of fn as mod of f1 plus summation I runs from 2 to n mod नहीं bracket, मैंने क्या लिखा हूँ, I thought मैंने कुछ जरूर, अच्छा fi minus fi minus 1, you can check क्योंकि ये टेलीस्कोपिक सम है, सारा खत्म हो जाएगा, बचेगा तो खाली अपना fn, बिल्कुल सही. This mod is less than equal to, obviously by triangle inequality, mod of fn plus summation I runs from 2 to n fi minus 1, which is the same as gn, which is less than equal to GAE because it is a monotonic increasing function that converges upwards to G, यानी ये बढ़ते बढ़ते G बन जाता है, so इससे less than equal to होगा because it's monotonic increasing, और ये इसका limit है, तो इसका मतलब Fn is dominated by G almost everywhere. So now this is true for all n greater than equal to 1. It implies that taking the limit, when a modulus of f is equal to limit n approaches infinity, fn almost everywhere वो पता ही है, is less than equal to mod of g, mod या g लिखना because g is non-negative almost everywhere. So hence f must belong to LP. ये important है, f must belong to LP. पहली बात, fn converges to f almost everywhere, so you have a sequence of measurable functions because fn are inside LP, okay, and of course, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि fn's are measurable by our assumption because they belong to LP mu. So f is almost everywhere limit of a sequence of measurable functions. It means f is measurable. पहली बात. और दूसरा अगर मैं इसको देखूं, I also have 0 is less than equal to mod f raised to power p is less than equal to g raised to power p, right? And g raised to power p is integrable, right? Right. G raised to power p is integrable. So this is sandwiched between two integrable functions. Theorem, yes. Huh? Mod of बिल्कुल. By sandwich theorem, mod f to p is integrable. बिल्कुल, this is integrable. जिसका मतलब है f belongs to LP. ठीक है? तो हमें एक फंक्शन तो मिल गई LP में, लेकिन अब हमें दिखाना है in norm it will converge, right? Also, now we are going to use monotone convergence theorem. Also, fx minus fnx is less than equal to twice gx. Obvious, almost everywhere. And limit n approaches infinity, fnx, because it converges pointwise to everywhere, to this fx is equal to 0 almost everywhere. So what are we getting? So fn minus fx is dominated by a Lebesgue integrable function, and this integral goes to 0, right? So that means it implies that, what does it imply? पहले तो इसका मतलब ये है, actually मैं यहाँ raised power p कर सकता था, so चलो, मतलब ये तो obvious है by this mod of f is less than equal to g, and of course for each n this is also less than equal to g.